Ladies and gentlemen, good day and welcome to Mayur Uniquoters Ltd Q3 FY24 Earnings Conference Call hosted by Monarch Networth Capital Ltd. As a reminder, all participant lines will be in the listen-only mode and there will be an opportunity for you to ask questions after the presentation concludes. Should you need assistance during this conference call, please signal an operator by pressing star then 0 on your touchtone phone. Please note that this conference is being recorded. I now hand the conference over to Mr. Rahul Dani from Monarch Networth Capital. Thank you, and over to you, Mr. Dani. Thank you, Nirav. Good afternoon, everyone. On behalf of Monarch Networth Capital, it's our pleasure to host the senior management of Mayur Uniquoters. We have with us Mr. Suresh Kumar Podar, Chairman and Managing Director of the company, and Mr. Vinod Sharma, CFO of the company. I would now request Mr. Vinod Sharma to start the call with his opening remarks. Then we move to Q&A. Thank you, and over to you, sir. Thank you, Rahul. Good afternoon, dear investors and analysts. Ladies and gentlemen, it is a great pleasure to be here to share with you the performance of Mayur. Thanks for giving your precious time to join Mayur Uniquoters Ltd Q3 FY24 conference call. Mayur Uniquoters Ltd, being a market leader in the synthetic leather industry and an organized player, has been able to leverage the emerging opportunities and delivered exemplary performance in past years, both in national and international business markets. Now, I would like to start with financial highlights for Q3 FY24 under review, and we will also give replies to your queries after our review on the financial results for the quarter. The company has achieved the revenue from operation on a standalone basis is rupees 175 crores, PBT 39 crores, and PAT 29 crores. In the quarter, the revenue is decreased by 4%, but the PBT and PAT have increased very good by 3%. The revenue from operation on consolidated basis is rupees 178 crores, PBT 36.45 crores, and PAT 27.30 crores. Our endeavor is to make the company a preferred supplier for the leading OEMs, especially in US and European markets. As earlier informed, we have been selected and received good orders from OEMs for OEM supplies to some new models in export and domestic markets, and based on that, our OEM export sales is expected to increase in coming quarters of next 2 years. The supply to some new models has already started, and some new models is expected to start in coming quarters. So we are having good sales performance in next 2 years and coming quarters. While pursuing our business interest, Mayur Uniquoters has also been endeavoring to fulfill our responsibilities towards the societies. Under the corporate social responsibilities programs, we contributed towards Har Ghar Tiranga regular plantations plan to do at large scale income and in this years and coming years. The company has also adopted many happy schools for education for children, and the company has worked on education for all and underprivileged children's various healthcare initiatives, especially child care development, and water for all, sanitation and school area, distribution of books, bags, clothes, etc., and most importantly, family planning and family welfare schemes in the villages. The state government has also recognized these initiatives taken by companies on various platforms. I am very much thankful to all the investors for their valuable time, to those who became the part of this earning call. With this positive note, I would like to conclude and request you all to open the forum for questions. Thank you very much. We will now begin the question and answer session. Anyone who wishes to ask a question may press star and 1 on their touchtone telephone. If you wish to remove yourself from the question queue, you may press star and 2. Participants are requested to use handsets while asking a question. Ladies and gentlemen, we will wait for a moment while the question queue assembles. Participants, you may press star and 1 to ask a question. Ladies and gentlemen, you may press star and 1 to ask a question. The first question is from the line of Priyank Chheda from Vallum Capital. Please go ahead. Sir, if you can share the PVC volumes and PVU volumes for the quarter as well as the segments breakup
it would be great. It's a request that these data points, if are shared on the press release or in the opening remarks, it saves a lot of time. We will tell you the total volume of PVC and PU in the quarter. Total volume we sold is 70 lakhs 55,000 meters, and out of that the PU was 2 lakhs 7,000 meters. Okay. And sales breakup in the segments of domestic. Sales break. You can note down. Export general 177 crores. You are telling for the YTD. Okay, I'm telling you quarterly. Okay. The export general 17.66 crores. Export OM 35.42 crores. Total export is 53.09 crores. Auto OM 41.60. Auto replacement 37.80. Footwear 33.60. Furnishing 5.60, and remaining is you can club in others. Got it. So where are we on the export volumes that we were supposed to scale up on the various OEM platforms? If you can help me, the incremental orders that would come from say the BMW, which we were planning to scale up from 4,000 to 40,000, and for the Ford Motors, the new supplies were supposed to start, as well as Mercedes volumes pick up. So if you can help me on the total volumes of exports as well as OEM-wise, where are we scaling up? BMW is still 4,000, is 40,000, which new models we were talking, that will be from April. From April 2024. Okay. BMW volume, because this is, whenever they start a new model, it's always 6 months here and there. Sometimes they say they will start at this time, then suddenly they come up and say another 2 months. So now it's thing for sure that from April it should start. BMW. Thank you. Priyanka, I'll request you to come back for a follow-up question. The next question is from the line of Ritika Naik, individual investor. Please go ahead. Hi, sir. So could you give us an idea of how was the realizations this quarter? Were they slightly lower because the revenue QOQ, if you see, was lower, but the volumes were flattish? You want to know the regions of revenue lower in this quarter as against the previous quarter, right? Yes. Yes. So basically, it is the because of footwear, because we have downsell in footwear, and some quantity we seen downwards in replacement. Otherwise, in overall, our revenue is 3%, but profit is up by 9%. Okay. And was there any impact of freight in this quarter for our exports? And do we see any impact in the ensuing quarters? Also, what is our outlook for FY25? Overall increase in export. Overall export in increase is 27%, and in which OEM has increased 42% in last 9 months of this year, and because of this increase in exports, our overall increase in export itself 27%, and in coming quarters it will be increasing gradually. No, see, if you look at exports overall from Q1 to Q3, there's been a decline from 66 crores to 53 crores. Yeah. Yeah, because in 2 months, OEM exports in US, there was some strike in the Ford plants. Yes. So that's what the reason of decline in So how exports. do we
see that playing out in Q4 and Q1 of next year? Yeah, it will be going to increase. Okay, so is that issue at the Ford plant sorted? Yes. Okay. And also we saw a decline in auto replacement domestic. Yes. Because of that, the requirement put by the government that other backward seats will also be having safety bags concept. That's why this requirement, the automotive companies and the customers were working on that to implement that safety bags in backward seats. So how do we see it playing out in Q4 and Q1? Sorry? You see, How let do we see me this auto explain you. replacement segment playing out in Q4 and Q1? Do we still see Just- the demand being low? Just listen. You see, regarding replacement market, in every car, in the front seat, there is a, what you call that? Safety bag. Safety bag. नहीं वो क्या बोलते हैं यार उसको? Front seat. You see, in the Dashboard. dashboard. No, in front seat, when there is an accident, this open out. सेफ्टी बैग से ओपन आउट होता है बैलून में. सेफ्टी बैग भी होता है वो. नहीं होता है यार, क्या बोलते हैं उसको? सामने की सीट में जो मतलब when there is an accident that the balloon comes out for the safety. Yes. Yeah, but in the back seat it is not there. Now they have made compulsion in the back seat also. So whatever in replacement market going on the back seat, that they have to change the design or all these things. So that's why it is taking little time. But it will happen. I think so. I can't assure you, but in next 3 months it should happen. So we do see Q4 being on the same lines as Q3 when it comes to auto replacement. Q4 में भी आ जाएगा क्या सेम लाइन में? Q4 में नहीं. No, Q4 में नहीं आएगा. आपका आएगा तो फर्स्ट या सेकेंड क्वार्टर में आएगा, क्योंकि because this is a technical matter, so this has to be solved. Government is after that, and they are also requesting government that please increase the time, and they are working at the same time to produce the seat cover which can stand. So I think, if you ask me frankly, it will happen in the second quarter. Maybe first quarter. Okay. Or maybe, May or June, something like that. End of the first quarter. Okay. And we have some fixed price contracts also, right, for exports. So are we impacted because of increase in freight costs? Fixed contract? Fixed price contracts we have, right, for exports. Yeah. So it is a temporary impact on sea freight, and after March, this issue is going to be vanished. No, I think that should be. We cannot take that. This has happened, because of this war. Because the Suez Canal was closed. That's why it is there. Now let's see when it will be. Everybody is saying just wait and see. I can't say that when that will. No, but what impact do we see on the margins because of that? Of course, about you can say 7-8 rupees down. It's costing us about 7 to 8 rupees more per meter. Okay. And what kind of outlook do we see for FY25? For what? For the company as a whole. I mean 25, 26 yes, you are next talking. year. Sorry, No, 24, 5. Yes. Yes. Yeah, it should be better, definitely. But real result you will see in 25, 26.
Because as I told you previously also, the new models order we have been given, but they have not started in full swing right now. So gradually they are increasing us. जैसे मान लीजिए मुझे अगर नए ऑर्डर की बात हम कर रहे हैं, अगर 2 लाख मीटर मिलना है जो कि सैंक्शन हो गया, तो अभी समझिए मुश्किल से 10-15 हजार हुआ है, हर महीने बढ़ता जा रहा है. तो मुझे अगर आप पूछो तो 25-26 में इसका फुल इफेक्ट आ जाएगा, 24-25 में भी आएगा डेफिनेटली. Thank you. Ritika, I'll request to come back for a question. Thank you. Next question is from the line of Rashna Kukreja from SIMPL. Please go ahead. Hi. Thanks for the opportunity. Sir, can you please share if there has been any improvement in terms of realization on a sequential and year-on-year basis? Realization on FY basis in overall totality? On quarter-on-quarter basis and year-on-year basis, realization. Sell price. Sell price. Spending. Oh, no. Sell price has not increased. Okay. So it's the same decrease over in quarter. prices. But still we are managing with our management and, changing the formulation to reduce the prices so that bottom line is not hurt. But the prices has not increased. Top line prices per meter is not increased. Okay. So why the prices have not increased and in which segments, if you can specify? So you see, in all the segments, now the market is very tight. And other thing, we are surviving because we are dealing with top auto OEM companies, whether it is local or whether it is export or our general export. There we are getting good volume and good profits also, comparatively. But in local market, like footwear I would like to tell that because they have introduced some BIS specification, so they have some deadline. Now the problem is for the manufacturer. They have to make the material, supply it to the wholesaler, then wholesaler supply to retailer, then retailer supply to the end customer. Now this is a big circle of 6 months. So therefore, people are scared to keep more stock because on a particular date, they will not be allowed to sell any material without BIS. So they are fighting with the government that please allow the small industries or up to the certain level industries for this. But government is not agreeing and they are fighting. I think ultimately they have to accept. So it's a question of time. Now the very, very big companies, they have started introducing. But because the footwear business is 80% is for the lower, segment. Maybe 15% for the medium segment and 5% for the top segments. So these big companies, those who are manufacturing for big segment, they are able to do it. Okay, got it. So, as you said, the realization has remained same. So, what was the reason, and if we see, what was the reason for the fall, or what was the reason? The reason for the realization not improving. Realization is not improved. So what we want to ask, ma'am? As sir said, the realization was same, right? For the realization, you mean to say per meter cost, or you are asking for total top line? Per meter cost, sir. Fall. The fall was due to what? If the prices are going down, how the prices will increase? Okay. Everybody is fighting in this market. The government may say that we are doing this, but in general products, the prices are not increasing. Not at all. Thank you. Rashna, sorry to interrupt you. I'll request to come back for a follow-up question. The next question is from the line of Abhilasha Satale from Quantum Asset Managers. Please go ahead.
Okay. Yeah, thank you for taking my question, sir. So, basically, I just want to know that in our previous calls, we have indicated that we have around, 550-600 crores of export order book, for OEMs. So how do we see the execution in terms like, what is your current visibility? Because you have been saying that the execution has been slow from the OEM front. So you were expecting these orders to get executed by FY26. So based on current assessment, how much do you see execution in FY25 and 26? डाउन है, टॉप लाइन डाउन है. नेक्स्ट ईयर में क्या सोच रहे हैं कि इसका बढ़ेगा? उसका रीजन बिकॉज ऑफ दिस एक्सपोर्ट 24-25 का बढ़ेगा, but as I told in the previous gentleman, that from 25-26 you will see the real increment. 24-25 will also increase, but not in a very big scale. Correct. But the profitability will definitely increase. Yeah, Abhilasha ma'am, have you got our reply? हाँ, मतलब ये 600 करोड़ में 26 तक हो जाएंगे. ये कि 1-2 क्वार्टर का डिले हो सकता है, बट व्हाट इज आवर टाइमलाइन की उनसे हमको क्या इंडिकेशन मिला है कि हमको कब तक ये ऑर्डर कंप्लीट करनी है? ये ऑर्डर्स तो रेगुलर चलते हैं, पर ग्रेजुअली इंक्रीज होते हैं. जब भी नए मॉडल्स के लिए कोई ऑर्डर्स हमारे पास आते हैं तो कंफर्म होते हैं, बट ग्रेजुअली पिकअप होता है. वो ग्रेजुअली इंक्रीज होके और फुल क्वांटिटी पहुंचते इसको 25-26 में फुल हो जाएगा. ये कंप्लीट मतलब हाईएस्ट पीक लेवल पे पहुंचेगा 25-26 में. So you will see the very handsome and good increase in the top line in FY25. Okay. Or margin. I'm sorry to interrupt you. The line for the management dropped. Ladies and gentlemen, thank you for your patience. We have the line for the management reconnected. Sir, you may go ahead. Yeah. So we as we told you, our real sell will you will see in 25-26, and it will be highest. And it will an increase will you will see in 24-25 also. Right. और ये margin front पे how much lever is there once we start executing these orders full-fledged? Definitely better than today. Any indication like 100 basis points, 200 basis points? That we can't give you right now, but we assure you that it will be better. Okay, thank you. Thank you. Next question is from the line of Shashank Kanodia from ICICI Securities. Please go ahead. Yeah, hi sir, good afternoon. Since the last call you mentioned that second half will be better than the first half, and still we put in flat numbers. So, going forward, how do we see closing for this fiscal year next year? So, do we expect this year to close at some growth, or it's going to be largely flattish in nature? This year, hopefully, it will be flat. But definitely, it will be going to increase in next year, and then again, FY25-26. No, but the bottom line will increase for this year also. And if you see, the bottom line has already increased. Sureshji and team, sir, point is that we've been promising good stuff, but my numbers, sir, वो promise को deliver नहीं करते हैं time and again. So should investors largely lose hope कि हम कुछ अच्छा कर सकते हैं, या हम professionalize करेंगे sir team को, या how do we look at it? Because sir, इस साल expectation है कि हम 900 crore का sell करेंगे, 9,900 crores. We'll still land at less than 800 crores at this rate. Next year, we're guiding for decent growth and actual growth to happen in FY26. So, sir, time and again, there has been over-promising and under-deliver from the management side. So, how do we look at it? There is one thing be assured. Number one, for any company, it is very important, in my opinion, to see the bottom line. Now, today, I can increase top line like anything. Every year, I can increase 25%, 35%. But if my bottom line is going down, there is no meaning of increasing the top line. So my always aim is that my bottom line should be maintained. So for that, you have to go all over the world. Now, recently we have introduced marine product. We are not making any marine product.
but now we have started getting orders. So everything, in business, it's not just like that, you can do something. You have to do, it will take time. Now this marine, we are working from last 3 years. Now from this year, we have started getting the orders. Within 1 year time, in marine, we will have good export orders. So, main thing is, market is always, who knows that this BIS will happen, and suddenly the market is 50-60% down. What do? You can't help it. Thank you. What I am trying to do, that to maintain my bottom line, to increase my bottom line, I go to different part of the world and to see which type of customer I can catch with my profitability increasing. Now with this marine product, it is just like a automotive, and we are getting very good response. But one thing you must understand. Suppose I came to you today, you are buying X material. Okay? My prices is good, everything is good. But I have just approached you, and you are buying from somebody from last 10 years, 15 years, 5 years, 20 years. You will not give me the business just like that. It depends on circumstances also. Suppose the supplier from which he is buying, if he is not able to supply in time, then your, sale increases suddenly. So everything takes time, and now you see about footwear. Now what is happening in footwear? This BIS, Jamela and all those things. Further, every day new factories are coming. And what they are doing? They are just reducing the price. So what do? I can't reduce the price. If once you reduce the price, you can never increase in your lifetime. So now what we have decided, like automotive industry, we are approaching all the world's big brands. Those who are selling in their brands these footwear products and leather good products. Now like Zara, they have 4 visits to our Gwalior factory. And now we are sure in next 3-4 months time, we will get the order. Now, when we catch hold of these kind of a customer, then we can sell their material all over the world. They will allow us to sell any part of the world from wherever they are buying those products. But these things, if I want to register to somebody for the whole world, it's not that they will just see and 1 or 2 visits, this will happen. Now Zara, we are working from last 3 years. It took us 1.5 years to allow them to talk to us that what we are not. So I have to work according to the future. I cannot go on the product where I have to fight every day for the prices, because I am never going to adjust myself with the quality. I cannot play with the quality even 1%. What people are doing, reducing the prices and decreasing the quality. And their sale is increasing. But see the bottom line. How many companies, manufacturing companies, had a bottom line like this? Because I am after it. I can increase sale tomorrow. Every year I can say, increase the sale 30-40%. There is no problem. But what is the use? You tell me. You have more credit. You have to take more loan. So what is the use? Now today you see, in our company there is 0 loan. We have surplus. That's why we are able to work. So, Thank you. Frankly speaking, we are trying our best. Whatever I am telling you in any this quarterly result, that is what I see in the market. That market is not in my control. But I can assure you that we are doing our best. And the customer, any customer who has come to Mayur, they are never going back. Now, if the customer has, because, we are B2B, we are not B2C,
So all predictions are according to my supplier. Whatever they say, we tell you. And always it happens, Now, so many companies are now automotive company. You must have seen. Yes, Tatas, Mahindras, they are coming up new models with so many new models. But what happens? Now, suppose they have come out with 5 new models and they have estimated X quantity of the sales. But until and unless that model goes in the market, they don't know actually what is going to be sold. So even after putting up the model, you know what is happening after 3-4 months. So whatever prediction we are giving you, we are giving according to our customers. Now who knows that this BIS will happen? And you will not believe these last 3-4 months used to be the best period for footwear industry, which has gone down. During these last 4-5 months, the business increases more than 30-40% now. And instead of that, it has gone down. So what I am trying to say, that we are telling you whatever we get further from our supplier, buyer, and accordingly we are talking to you. अब बताइए कौन मतलब कितना % डाउन हो गया? Footwear आपका 18% footwear was down. It's not a matter of joke. Whereas our footwear was highest. But what you do? Even we are trying our best to meet other areas. Why we have opened so many fronts? Now like we have started retailing this furnishing business. It is going, good. Last month we have sold in retail 20,000 meters, which is not a matter of joke. Now, gradually that will start. We have more than 500 dealers we have made in India. Our plan is in next 6 months to make another 500. अभी स्टार्टिंग में मुश्किल से डेली का 5 या 7 कस्टमर का सेल होता था. अभी हमारे 30 से 40 कस्टमर every day started buying. Different areas. So what I'm trying to say, we have a good future plan, but all these plans takes time. And now you see why I have started this furnishing business. The main reason is that we know the real price. You are coming directly with the consumer. So your margin is also good. The day it will start having 2-3 lakhs meter, you see the bottom line will go like hell. So everything takes time. Whatever we say, believe me, we say according to our customer what they say. And एक कहावत है ना अपने हिंदुस्तान में, लक्ष्मी बड़ी चंचल होती है. वो आज यहाँ कल वहाँ. आज कोई बिजनेस टॉप में जा रहा है, कल कोई. अब देखिए आईटी इतना टॉप में था, डाउन हो गया, अब फिर टॉप में जाना शुरू हो गया. तो यू सी दिस काइंड ऑफ थिंग्स हैपेंस इन द बिजनेस, बट वी हैव टू सी whether we are able to manage our bottom line. Thank you. So the line for the participant dropped. We'll move on to the next question. Yeah. And before that, a request to all the participants, please stick to one question per participant. The next question is from the line of Deepak Lalwani from Unifi Capital. Please go ahead. Hello, sir. Thank you for the opportunity. Sir, I just wanted some clarity on, which OEMs have given you new business. What is the quantum of the business and when should it start ramping up? Thank you. New business. No, new business. OEM. Quantum. As I told you, that from next quarter, it will start increasing, and by 25-26, whatever we have been, allotted. You see, in automotive industry, at least 2 to 2.5 years before they start a new model, they decide the supplier. And then accordingly, they take step by step. Now, whatever we have got, like there is one new quality which we have introduced, and we are the only supplier in USA.
to a Slantis company, big company. But that plan is going on. They have just put up some few thousand cars. Now, every quarter, they will increase it. Why I am saying 25, 26? By 25, 26, they will all be in top. I mean, whatever I have got the orders, those orders will be completely start executing. अच्छा. And sir, what will be the quantum of the order and customer का नाम क्या आप बता सकते हैं? कस्टमर तो सभी है. अब जैसे मान लीजिए OEM की बात करें तो अमेरिका में स्लांटिस है, फोर्ड मोटर है, उसके बाद आपके इधर BMW है, मर्सिडीज है साउथ अफ्रीका में. अभी इनसे अमेरिका की भी बात चल रही है BMW से कि दे मे बाय इन अमेरिका ऑल्सो बिकॉज दे आर वेरी हैप्पी. दिस मर्सिडीज इज हैप्पी. Continuously Mercedes, we are supplying 30,000 meters every month from last 1.5 years. There is no problem. They are all happy. You know, they are chasing us that we should start supplying from there also. They are very much interested. But in automotive, suppose you are supplying a particular model. To change that model to other customers, it costs them hell of money. So unless they see that my new supplier is having a good gap of the prices or other benefit, because एक मॉडल का खाली सिस्टम चेंज करने में इनका $4 से $5 लाख लग जाता. तो दे हैव टू गेट अश्योर्ड ऑल्सो कि आज मैंने तो प्राइस कम कोट कर दिया, 4 दिन बाद मैं बोलूँ नहीं होगा. तो वो ये भी वर्क करते हैं ना कि आपने अगर कम प्राइस दी है तो वेदर यू विल बी एबल टू कंटिन्यू विद दिस प्राइस. तो देयर आर सो मेनी फैक्टर. तो अभी जो मैं बात कर रहा हूँ 25-26 के एंड तक, और ये हर क्वार्टर बढ़ता रहेगा. आप देखिए ना लास्ट क्वार्टर और इस क्वार्टर में OEM का कितना डिफरेंस आ गया. 42% डिफरेंस 9 मंथ्स. और जिसपे कि बीच में एकदम डाउन हो गया था, अभी लास्ट 2-2.5 महीने से पिकअप कर रहा है लाइक एनीथिंग. तो जो भी सर इन द डोमेस्टिक, मेरा एक और क्वेश्चन था. इन द डोमेस्टिक मार्केट, द रिप्लेसमेंट मार्केट जो आप बात कर रहे थे, सो इज दैट अ परमानेंट इशू और you know it's a temporary phenomena where you expect that volume will come back? ऑटो OEM की बात करूं, लोकल डोमेस्टिक, उसमें करीब 12% सेल बढ़ा है 9 महीने में. एंड ऑटो रिप्लेसमेंट की बात अभी की बात कर रहे हैं. We are telling you about the auto OEM in domestic. Auto OEM in domestic. एक्सपोर्ट में तो 27% बढ़ा है और डोमेस्टिक में अभी 12% बढ़ा है. और ये रिप्लेसमेंट टेम्पोररी फिनोमेना. हाँ, जो रिप्लेसमेंट मार्केट है वो मैंने अभी बताया था कि एयर बैग वाला प्रॉब्लम शुरू हो गया. नाउ गवर्नमेंट वांट्स दैट इन द बैक सीट ऑल्सो देयर शुड बी एन एयर बैग. आगे की सीट में एयर बैग शुरू से है, तो उसके हिसाब से जो भी मटेरियल है और उन्होंने जो भी सिस्टम कर रखा है, जैसे वो कुछ सिस्टम है एयर ब्लो करते हैं नीचे से आगे की सीट में. अब पीछे की सीट में वो करने के लिए OEM में तो हो जाएगा, बिकॉज दे आर इन द OEM दे विल डू इट. बट इन रिप्लेसमेंट मार्केट दे आर फाइंडिंग आउट सम सॉल्यूशन. और दूसरी बात, जहाँ तक रिप्लेसमेंट मार्केट है, ये तो हम बात कर रहे हैं खाली मारुति की मेनली. हम तो रिप्लेसमेंट मार्केट में औरों को भी दे रहे हैं. वो ठीक बढ़ रहा है, बट इट इज वेरी स्लो. और ये तो क्या बहुत बड़ा मार्केट था. तो अब वो उम्मीद है ठीक होगा. नहीं तो देखिए, आप एक बात समझिए, आज हम जिनको माल दे रहे हैं, जो सीट बना रहे हैं और खाली मारुति को सप्लाई कर रहे हैं, बट इन व्हाट कंडीशन दे आर. हम तो आज मान लीजिए लेदर क्लॉथ बेच रहे हैं तो 20 जगह बेच सकते हैं, बट उनके लिए जीने मरने का सवाल हो गया. तो वो लगे हुए हैं पीछे. दिस मैटर विल बी सॉल्व, बट आई डोंट नो वेदर इन 3 months or 6 months. बट स्टिल आई एम टेलिंग यू, आई एम नॉट डिपेंडिंग ऑन मारुति. नाउ आई हैव स्टार्टेड विथ अदर
customers also, other OEMs also, to go and try to influence them for retail market. And same one or two, I don't remember the name of the customer OEMs. We have already started little bit. अभी प्रॉब्लम क्या है आप समझिए, मारुति requirement is so fantastic, so high that and for every seat they are giving one seat free. मतलब सेल्स का ये है, बाकी लोगों में सब जगह नहीं है, तो इसीलिए ज्यादा इफेक्ट आ रहा है. अभी ये बात समझ में आ गई कि खाली मारुति पे डिपेंड होने से नहीं चलेगा. So we are trying to capture other areas also, but that again that will go slowly. और लेकिन ये मारुति तो करेगी, करना ही पड़ेगा, कोई उपाय नहीं. They have to do and they will do. It's a matter of time. 3 महीना लगता है, 6 महीना लगता है, I can't say. But लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है, जिस तरह से लोगों से बातचीत होती है, हमारे कस्टमर से बात होती है, उनका ये कहना है कि भाई ये तो हमको 2-4 महीने में शॉर्ट आउट करना ही पड़ेगा, नहीं तो हमारी तो दुकान ही उठ जाएगी. तो दिस इज you are dealing in different kind of market. Every market, आज मान लीजिए आज हम लोग ऑटोमोटिव में डील कर रहे हैं, आज हम फुटवेयर में डील कर रहे हैं, आज हम लेदर गुड्स में डील कर रहे हैं, आज हम फर्निशिंग में डील कर रहे हैं. हमारा फायदा ये है कि आज सोचिए एक टाइम में मोर देन 55% वी वर सेलिंग टू फुटवेयर इंडस्ट्री. आज हमने ऑटोमोटिव में अपना पैर आगे बढ़ाया, तो आज हम कम से कम बचे हुए तो है ना, डाउन तो नहीं हो रहा है. वाई हैव स्टार्टेड फर्निशिंग. पूरा मैंने एकदम, आप सोचिए 6-8 महीने के अंदर 500 डीलर बनाना कोई मजाक की बात है. पूरे चारों ईस्ट, नॉर्थ, साउथ, वेस्ट सब में हमने मार्केटिंग के स्ट्रॉन्ग आदमी रखे हुए हैं. और हमारा काम ही यही है कि रोज कम से कम महीने में 15-20 मिनिमम, 20 क्या उससे ज्यादा डीलर बनाने हैं. जितने डीलर बढ़ेंगे उतनी सेल बढ़ेगी. एंड दिस विल बी, मैं तो बहुत ज्यादा डिपेंड कर रहा हूँ अभी फर्निशिंग बिजनेस पे, क्योंकि मुझे मालूम है. और अभी आप बिलीव नहीं करोगे, बाहर भी, अब जैसे बाहर हम लोग जो माल भेजते हैं तो समझ लीजिए ऑटोमोटिव रिप्लेसमेंट या डोमेस्टिक होटल, रेस्टोरेंट्स, इन सब में जाता है. अभी हमने हमारा ये रेंज जो अपन यहाँ कर रहे हैं फर्निशिंग मार्केट में, वी हैव गिवन दैट रेंज टू आवर, वी हैव सब्सिडी इन अमेरिका. We have given those range in America also, and they are showing it to our customer. They have started coming up. They say, okay, material is very good, we'll start. अब क्या है कि चीजें स्टार्ट करने में बहुत टाइम लगती है. आप बताइए मुझे, आज मैं आपको बताऊं फुटवेयर इंडस्ट्री या लेदर गुड्स इंडस्ट्री, आज हमारे यहाँ जो स्पोर्ट शूज है, जो बेस्ट से बेस्ट कंपनी है यहाँ की, उसका ब्रांड 3,000 रुपए से ऊपर नहीं है. और बाहर वाले जो ब्रांड है वो सारे इन लोगों से खरीदते हैं. 30,000, 40,000, 20,000, कोई हिसाब ही नहीं है. क्यों? क्योंकि उन्होंने अपना ब्रांड नेम फिक्स कर लिया. दैट्स व्हाई दे आर गेटिंग. आज हम भी जो प्रॉफिट कर रहे हैं, भाई साहब आप एक बार देखिए लेदर क्लॉथ इंडस्ट्री की क्या हालात है. बिकॉज ऑफ आवर क्वालिटी, that we don't compromise at any cost with the quality. मुझे नहीं चाहिए, मुझे जो माल मेरा खराब होगा मैं घर में रख लूंगा. मैं कस्टमर के पास 1 मीटर माल गलत नहीं जाने दूँ. कॉस्ट भी बढ़ती है, लेकिन इट पेज इन द लॉन्ग. आज अभी कल की बात है, एक कस्टमर कहाँ से आया था, वो बता रहा था कतार से. कतार से एक आदमी आया, ढूंढता आया कि मयूर को ढूंढ रहा है, क्योंकि मार्केट में हम तो यूएई वगैरह में सब जगह माल देते हैं दुनिया भर का. अब वो आके बैठ रहा है, हमको तो ये भी चाहिए, हमको वो भी चाहिए. व्हाट आई एम ट्राइंग टू से कि इज्जत जमाने में और कॉन्फिडेंस जमाने में टाइम लगता है. और हम अब हर चीज तो एक लिमिट से ही होगी ना. अब आज बताइए, ऑटोमोटिव में या मरीन में आज इंडिया में कोई नहीं है.
Nobody is. We are the only supplier. Because we have taken the pain 10, 12 years before, I spent more than 10 crores rupees on machinery, on testing equipment and all those things. शुरू में बड़ा भारी लग रहा था, अब रिजल्ट मिला ना. तो कहने का मतलब ये है कि रेस्ट एश्योर Mayur will not leave any stone unturned, but it will not compromise with the profitability. This is for sure. क्योंकि मेरा ये लेदर क्लॉथ का एक्सपीरियंस 1962 से है और मैंने देखा है कहीं भी आपने जोश में आके प्राइस घटा दिया, वो आपकी जिंदगी भर के लिए घटा. So what I am trying to say that please don't go too much on what I am saying. I am saying only whatever our customers are saying. बाकी हमारी तरफ से कोई भी लकुना नहीं है कि आज उनको जो चीज चाहिए, टाइमली चाहिए, क्वालिटी चाहिए, we are all giving it. तो आप बताइए, ऑटोमोटिव कंपनी मर्सिडीज, BMW जैसे को सप्लाई करना कोई मजाक है? आज यहाँ भी वॉक्सवैगन बोलिए, MG मोटर बोलिए, जितने भी टॉप क्वालिटी मैन्युफैक्चरर, टोयोटा बोलिए, सबको अपन दे रहे हैं. मारुति कोई जमाने में हम 2-2.5 लाख मीटर दे रहे थे, अभी खाली 30,000 मीटर दे रहा हूँ. क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि जो हाई रेंज की कार है उसमें दे रहा हूँ. उसमें आप 2 पैसे बना सकते हो. बाकी में आप खाली करते जाइए, 2 लाख 2.5 लाख मीटर आज मैं दे देता हूँ. मुश्किल से 5% मार्जिन भी नहीं. क्या फायदा ऐसा काम करके? तो कहने का मतलब इन नट सेल यही है कि वी आर ट्राइंग अवर बेस्ट, वट एवर प्रिडिक्शन वी आर गिविंग अकॉर्डिंग टू अवर कस्टमर, बिकॉज वी आर B2B. इन B2C यस, अभी आज हम B2C फर्निशिंग में चालू किए हैं. मुझे मालूम है 3 साल लगेंगे, 4 साल लगेंगे इसमें, लेकिन लकीली इट इज इंक्रीजिंग. आज रिटेल में है, अगर महीने में 5,000 मीटर भी मेरी सेल बढ़ रही है, तो आई थिंक इट इज जस्ट लाइक 25,000 और 35,000 मीटर्स ऑफ माई दिस सेल्स. कहने का मतलब ये है, मयूर इज ट्राइंग ऑल द पार्ट्स, ऑल द एरियाज, वेरेवर इट इज पॉसिबल. अब ऊपर नीचे देखिए होता है. देखिए क्या है कि आप लोग एक एक्सपेक्टेशन में रहते हो कि भाई ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन मैन्युफैक्चरर को मालूम है क्या प्रॉब्लम्स है, क्या चीजें हैं, क्या करना है आपको. सडनली कोई गवर्नमेंट का कुछ आ गया, फिर भी हम बॉटम लाइन मेंटेन करेंगे और बॉटम लाइन को इम्प्रूव करेंगे ही करेंगे. बाकी तो और भगवान की मर्जी. Okay. Your question is answered? Hello. The fun. Mr. Lalwani? Yeah. Hello. Yeah, Yeah. Now the time is over. I think you close the call. yeah, we proceed to the next question now. No. Time is already over. I think. Last question. You can take the last question. Okay. So the last question is from the line of Chirag Shah from White Pine Investment Management Private Limited. Please go ahead. Sir, thanks for the opportunity. Sir, in fact, I have 2-3 connected questions or clarification on earlier one. The first question is, you mentioned that there are more capacities coming up. So can you talk a little bit about this? So what kind of capacities and what size and who are putting up? Is it more regional thing? It is more or it is some large player? ये जो कैपेसिटी आ रही है, तो सब छोटे मोटे आ रहे हैं. आज हम प्लांट लगाते हैं तो कम से कम 150 करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट करते हैं. इनका प्लांट 20-25 करोड़ में लग जाता है. ओवरहेड भी नहीं है ज्यादा. तो उनका तो काम है कि आज मेरा 100 रुपया मटेरियल का कॉस्ट है, तो मैं 110 रुपया में माल बेच दूं. ओके. होता क्या है कि वो शुरू में जाते हैं प्राइस के चक्कर में और माल बिकता भी है, लेकिन बट इन कोर्स ऑफ टाइम, जैसा मैंने कहा
एक बार आपने प्राइस दे दिया, आप उसके बाद प्राइस बढ़ा ही नहीं सकते। इट इज इम्पॉसिबल इन अवर। वो क्या होता है आजकल ये हालत हो रही है। अभी गुजरात में एक के बाद एक फैक्ट्री आ रही है। अभी आज के 4-5 साल पहले बात करें तो मुश्किल से 2 फैक्ट्री थी, अभी 10 या 12 फैक्ट्री हो गई। वो तो क्या ये जो फैक्ट्री आ रही है सर, ये कौन से इंडस्ट्रीज को सप्लाई करते होंगे? इज इट मोर ऑटोमोटिव, मोर फुटवेयर इन नेचर, और इज इट नॉन ऑटोमोटिव? मतलब फिर किधर भी जाता हो ऐसा है कि क्या है? मतलब ये जो वो नॉन ऑटोमेटिव में ही रहते हैं ज्यादा। ये सब जो भी है, ये मार्केट, जनरल मार्केट, फुटवेयर या रिप्लेसमेंट मार्केट, ये सब में जहाँ सस्ता मटेरियल चाहिए। भैया हिंदुस्तान में 75 to 80% सेल किसी भी चीज की लोअर रेंज की है। 15% होगी मीडियम रेंज की, 5% होगी हाई रेंज की, और जो 75-80% रेंज की है उसमें तो हम जा ही नहीं सकते। अभी मैं आपको बताता हूँ एक सिंपल बात। करीब 15-20 दिन पहले मैं एक मेरे फुटवेयर मैन्युफैक्चरर के पास बैठा था। बहुत पुराना कस्टमर है, कम से कम 4-5 घंटे था उसके पास। तो हम अभी जैसे पीयू बना रहे हैं, पीयू इज लिटिल एक्सपेंसिव, उसके लिए हम उसको कन्विंस कर रहे थे। तो बोला कि इसके तो प्राइस ज़्यादा है, नहीं बिकेगा। मैंने कहा चल एक काम करते हैं, तुम बनाओ और ये इन्वेस्टमेंट मैं करता हूँ, तुम्हारे ब्रांड से ही होगा, सब कुछ होगा। ठीक है, बोल दिया। फिर मैंने पूछा कि भैया ये माल तुम जो बेच रहे हो इसमें क्या प्रॉफिट कर रहे हो? अब सरप्राइज करेंगे। ही टोल्ड मी 80% ऑफ द मटेरियल ही इज जस्ट नो प्रॉफिट नो लॉस। अच्छी खासी कंपनी है फुटवेयर की, जयपुर की। बराबर 20% में हम 10% फायदा करते हैं। हम बोले क्या नहीं है, तो बेटर है तुम 2% ही करो ना यार, उसमें कमाओ तो सही 30-40%। बट देखिए भाई साहब, मैं तो सीधी सी बात जानता हूँ। मेरे को एक चीज बताइए, आप लोग तो सारी दुनिया देखते हो, दुनिया भर के मैन्युफैक्चररों से बोलिए, किससे बोलिए आप लोग। हेलो Sorry for the inconvenience. We have lost the line for the management. Please hold as we reconnect them. Ladies and gentlemen, thank you for being on hold. We have the line for the management reconnected now. And we also have Mr. Shah in the queue. Thank you. या सर, सेकंड क्वेश्चन वो सर, बीआईएस का अभी नेगेटिव इम्पैक्ट तो हमने देख लिया इन्वेंट्री क्लियरेंस का। अभी जब से ये बीआईएस लागू पड़ेगा उसके बाद हाउ इट विल हैव पॉजिटिव इम्पैक्ट एंड व्हाट इज द काइंड ऑफ स्पेस, किस स्पेस से वो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा? अगर आप अगले 12 महीने के व्यू से अगर वो समझा सके तो इट वुड बी हेल्पफुल। बीआईएस की वजह से अपना नेगेटिव इम्पैक्ट आया। अब इसका वो तो सर, वो तो समझ गया इन्वेंट्री क्लियरेंस के चक्कर में इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा। देखिए पॉजिटिव तो रहेगा डेफिनेटली, लेकिन जैसा कि इम्पोर्ट कम होगा, कैसे होगा? मतलब कैसे होगा पॉजिटिव इम्पैक्ट, कैसे आएगा? इम्पोर्ट कम होगा उसके कारण आएगा कि प्राइसिंग का इम्पैक्ट ज्यादा करके आपको मिलेगा, वॉल्यूम पे ज्यादा नहीं आएगा? प्राइसिंग का नहीं है भाई, बीआईएस स्टैंडर्ड का एक लिमिट दे दिया है गवर्नमेंट ने, और आज जो आदमी मैन्युफैक्चरिंग करता है उससे लेके कंज्यूमर तक माल जाने के लिए इन लोगों की कम से कम 6 महीने की इन्वेंट्री रहती है। तो नाउ दे आर ऑल स्केयर्ड कि बाद में एक पर्टिकुलर टाइम के बाद अगर मेरा मटेरियल रह जाएगा तो फिर मैं उसका क्या करूंगा। ऐसी बात नहीं है कि सेल नहीं है, बट मार्केट में मटेरियल नहीं है, ये कारण है। तो बीआईएस आने के बाद सब आ जाएगा तो हो जाएगा ठीक वापस। अरे भाई फुटवेयर तो एक ऐसी चीज है उसके बिना चल ही नहीं सकता है। वो तो चाहिए ही चाहिए। 2 महीना 4 महीना 6 महीना आप रुक गए और इससे ज्यादा कौन रुकेगा? कोई नहीं रुकेगा। वो तो बेटर होगा ही, लेकिन मैं अभी जैसा मैंने पहले कहा कि नाउ इन फुटवेयर ऑल्सो एंड लेदर गुड्स ऑल्सो आई एम गोइंग टू द बिग ब्रांड फॉर विच वी हैव ऑलरेडी स्टार्टेड वर्किंग, एंड हमें पूरी उम्मीद है कि इन कोर्स ऑफ टाइम हमें धीरे धीरे बिजनेस मिलना शुरू हो जाएगा। वहाँ पे मार्केट डाउन और इसका भी कोई असर नहीं होना और प्राइसिंग भी अच्छी होनी। अभी आप एक देखिए करंटली बिग बायर्स कहाँ से लेते हैं? मतलब वो तो कहीं चाइना वगैरह से इम्पोर्ट करते होंगे और अभी आपसे लेंगे।
That is the change that will happen. No, that is what you are trying to highlight. Correct. बिग बायर्स कौन से वाले? अरे बिग बायर्स है ये, जो आप यूरोप अमेरिका जहाँ के भी जो बड़े बड़े ब्रांड हैं सारे ही है फुटवेयर्स वाले। वो क्या कहाँ से खरीद रहे हैं? चाइना से खरीद रहे हैं। आज मान लीजिए गारमेंट है, इंडिया से बांग्लादेश आगे बढ़ गए। फुटवेयर है, फुटवेयर में हमारा कोई एक्सपोर्ट ही नहीं है। कैन यू बिलीव वी आर एक्सपोर्टिंग ओनली 7% ऑफ द वर्ल्ड रिक्वायरमेंट। No, sir, my question is, अगर डोमेस्टिक मार्केट नॉन ऑटोमोटिव देखे तो बीआईएस का पॉजिटिव इम्पैक्ट विल हैपन बिकॉज आपका वॉल्यूम जोड़ का बढ़ेगा, बिकॉज यू विल सब्स्टिट्यूट सम इम्पोर्ट, और इट विल बी मोर क्वालिटी इंप्रूव हो जाएगा एंड हेंस प्राइसिंग के कारण बेनिफिट आएगा. सो व्हाई वुड बीआईएस सिग्निफिकेंटली बी बेनिफिशियल फॉर यू इन एटलीस्ट इन नॉन ऑटोमोटिव मार्केट? वो मैं पूछ रहा था. फॉर प्लेयर लाइक मयूर यूनिकोटर पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा, कैसे आएगा? नहीं, बीआईएस में तो देखिए पॉजिटिव इम्पैक्ट इसलिए आएगा कि अभी जो उनका मार्केट डाउन हो रहा है हमारे कस्टमर का, वो मार्केट बढ़ेगा तो मेरा भी, आज मान लीजिए मैं किसी एक कस्टमर को उसका 25% माल सप्लाई कर रहा हूँ, अब उसका सेल ही आधा हो गया तो मेरा तो 25 से 12% हो गया ना. तो वो जैसे जैसे पोजीशन पे आएगा बढ़ेगा. प्लस मैं खाली उस पर डिपेंड नहीं कर रहा हूँ, जैसा कि मैंने बताया. नाउ आई एम गोइंग टू द बिग ब्रांड्स. Nowadays there are at least 4-5 big companies who are manufacturing for these big brands and they are selling to them only. एक्सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ से और सारा मटेरियल इंपोर्ट कर रहे हैं, रॉ मटेरियल जहाँ से उनको बताया गया है, तो हम उसमें एंटर करना चाहते हैं. ओके. उससे क्या है कि पूरा वर्ल्ड वाइड मार्केट खुल जाएगा. ओके, थैंक यू वेरी मच. ऐसा है कि मैं किसी भी चीज में, एक ही चीज में मैं डिपेंड नहीं करना चाहता. आई वॉन्ट टू ओपन माई एरियाज एज मच एज पॉसिबल. मेरा खाली एक ही सोचना है. आज मुझे मालूम है कि वर्ल्ड में आर्टिफिशियल लेदर कितना बिक रहा है और मेरी जो सेल आज के दिन वो 0.5% भी नहीं है. तो 99.5% मार्केट तो है ना, तो खोजना पड़ेगा वो कहाँ पे है, तो वो खोज रहा है. रोज हम नए कस्टमर ला रहे हैं. Okay, I am not going to compromise with the profit. I don't want to sell just like that. What people are saying, यहाँ पे हर साल 6-7 कंपनियां नहीं आ रही है और 2-3 बंद हो रही है. क्या फायदा? I don't want to do that kind of business. Okay, got Mr. Shah? Yes, thank you. So that was the last question. I would now like to hand the conference over to the management for closing comments. Now from management I would like to say that I am very happy that I got a chance to listen to our customers, what they want, what is our drawback, what we should do, and as I explain you how we are moving forward and how we can retain our position as number one. And rest assured that from our company side we will not leave any stone unturned, and definitely when the things are moving in a right way today or tomorrow, you will get the result which we are getting already. Thank you very much for giving us time. Meet you next time. Thank you. Thank you. On behalf of Monarch Networth Capital, that concludes this conference. Thank you for joining us, and you may now disconnect your lines.